Hello, happy Durga Puja, happy Navratri, where it's actually not very happy for Assam because we all know about Zubeen Garg. So today I'm making this video. It's my responsibility to share about Zubeen Garg's death. What is happening in Assam, what has been going on from past 1 week. I don't have to say it, we all know who Zubeen Garg is. He was larger than life personality. He was not just a music icon but an emotion for every Assamese. So today I'll be speaking in 3 languages, Hindi, English and Assamese. Actually we were doing a project in Bishanath Chariali. So our field station was in Bishanath Ghat. So actually Zubeen Garg was doing a show the previous night, and this was after many years when he came in Bishanath and did a Bihu function, because we all know his sister Zonki met with an accident and unfortunately she passed away during that accident, and so it was a very big trauma in his life. He was very much unstable emotionally, and so after many years actually he performed in Bishanath. It was in 2022. It was at around 2 p.m. to 3 p.m. So Zubeen Garg, he came, and I actually nobody informed me. The media people, they knew, but nobody informed me. So he just came, he entered inside. I thought, what is this noise all about? So I see that there is a whole crowd outside the office. So then he entered, and I was awestruck, and I didn't know what to say to him. He was asking, यार ये की ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या ऑफिस है? मतलब आप बुरा मत मानना, it is my dream come true that I'm meeting you like this personally, and we are an NGO and we are working for turtles, this and that. And then I also happened to share with him that I sing and everything. I am a Visharat in classical music, and then I just told him, can you please wait for a few minutes? Let me just I want to take a photo of yours, so can I just quickly come and bring my phone? फिर उन्होंने बोला ठीक है, ओके, आपका जो गाँव है वो आ गया, एक्चुअली फ़ोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो बाय द टाइम आई रीच, तो बाकी सब बोल रहे थे फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो. और फिर उन्होंने बोला नहीं, उनको पहले उनके साथ कर लेते. तो मैं ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ा, एंड यू नो ही क्लिक द फोटो, एंड नाउ पीपल आर सेइंग दैट ही इज़ गॉड, यू नो ही हैज़ अ डिवाइन पावर. उसी टाइम मेरे को लग गया था, एंड आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं कुछ झूठ ही नहीं बोल रही हूँ. मैं क्यों मीसा को ठकवाना है काम. मेरा उस दिन मतलब एक हफ्ते से मेरा मन बहुत ख़राब था. आई वॉज बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. तो मेरे को लगा कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, यू नो, लाइक डेज वर नॉट गोइंग गुड. एंड देन व्हेन ही विजिटेड, इट वाज लाइक, यू नो, द यूनिवर्स हैड प्लान, एंड आई रियली फेल्ट लाइक हील्ड, यू नो, आई फेल्ट हील्ड. द ऑरा दैट ही हैड, जो एक होता है ना, लोगों का प्रेजेंस होता है, तो यू कुड फील दैट. वर्ल्ड नोज अबाउट जुबीन गार्ग. सो आप लोग को जो भी न्यूज़ दिया गया है कि या अली फेम, ही इज़ नॉट जस्ट या अली फेम. एक्चुअली या अली बहुत लेट था उनके करियर में. तो ही तो स्टार्टेड बैक इन 1990s से ही उन्होंने स्टार्ट किया. तो 1992 में एक्चुअली उनका एक एल्बम निकला था अनामिका करके, दैट वाज अ वेरी बिग हिट. तो उनसे ही उनका मतलब तब से ही मतलब ही वाज लाइक अ सुपरस्टार एंड रॉक स्टार, पता नहीं एवरीथिंग, यू नो. उस टाइम से ही वाज लाइक गिविंग बैक टू बैक हिट्स. देयर आर मेनी आर्टिस्ट, but to be a legend you have to be that, you have to have that X factor, you know. And से 1992 से ही उनका जो बैक टू बैक जो हिट रहा है वो असमीज इंडस्ट्री में. एंड अभी तो सबको मालूम हो गया कि ही हैज़ sung more than 40,000 songs, more than 40 languages, and I don't think किसी ने ये किया है अभी तक. लता मंगेशकर जी ने आई थिंक 26,000 गाने गाए थे. बहुत सारे अनरिकॉर्डेड सॉन्ग्स भी है, एंड अभी तक मतलब रिलीज़ भी नहीं हुआ है. एंड बिकॉज असम में वी डोंट कीप अ रिकॉर्ड, यू नो, रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. तो उन्होंने खुद ही बोला था, अगर आप उनके, इफ़ यू लुक एट दिस इंटरव्यूज, इफ यू ही ऑलवेज नेवर केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ही जस्ट लव्ड म्यूजिक, यू नो, ही वाज जस्ट इनटू म्यूजिक. कितना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं विद म्यूजिक, ही वाज ऑल अबाउट दैट, यू नो. गाने के थ्रू ही उन्होंने अपना जो पेन था उसको हील किया. तो वांट टू थैंक आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा for, you know, making the processes so smooth, and for helping his family carry out the final rituals so peacefully, and also allowing all his fans to meet him for the last time. Zubeen Garg ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया अभी तक. He was a very idealistic personality. मैं क्यों बोल रही हूँ idealistic? Because he always wanted कि, you know, there is peace among all. He never believed in religion. He never believed in caste or creed or language. Only
जो किया, it is a living proof that love can heal everything. कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं मान रहा था. सब लोगों की आंखों में जुबीन गार्ग के डेथ के लिए जो आंसू आ रहे थे, जो पेन, I haven't seen that in anybody else's case. He also healed a lot of wild animals like snakes, monkeys, crane. So he was that kind of a personality. Highly spiritual being, highly evolved being. If you hear his songs, he mentioned a lot about death. Because death is inevitable. उनके songs को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने deep songs थे. Someone who talks about death, someone who is not scared of death, someone who is not scared of anything, who is so fearless, who is so bold, who was so fearless, who was so bold, who did so much for the humanity, who stood up against all the injustices done to the Assamese culture as a whole. News and headlines going on about Siddharth Sharma, Shamkanu Mohanta. So I want to say something about Siddharth Sharma. He being the manager, he should have done better, he could have done better. We all can see in the videos that it was complete negligence, you know. He completely neglected Zubeen Garg. He was rowing a boat, नाव चला रहा था, पूरा अपने ही जोन में था. He didn't even care. The person who was clearly instructed to not go near the water or fire because of epilepsy, because of his health issues, he was just thrown into the sea by these people. And इतने सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि अकेले गए हैं, इतने सारे लोग थे. उनके बाद भी जब ये लोग बोल रहे कि आप देख लो जाके, उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ दिखाया. Why? Because he didn't care. মই অসমীয়া সমাজক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যে ইমান গালি দি আছে ক্ৰিয়েটৰ্ছবোৰক, কৈ আছে কি কিয় হেছটেগ লগাইছা, কিয় ইংলিছত কৈ আছা, কিয় হিন্দীত কৈ আছা, তোমালোকক ভিউজ লাগে নেকি? মই তাহাঁতক ক'ব বিচাৰিছোঁ, হেছটেগে কি কৰে? হেছটেগ ইজ SEO বেছড. হেছটেগে কি কৰে? হেছটেগে আপোনাৰ ৱাইডাৰ অডিয়েঞ্চ, বেছি মানুহৰ কাৰণে হেছটেগটোৱে হেল্প কৰে যাতে এটা ভিডিঅ' বেছি মানুহৰ তাতে যায়. চ' যোনবিলাক অসমীয়া ক্ৰিয়েটাৰ্ছে অসমীয়াত ইংলিছ বা হিন্দীত কৈ পিনে হেছটেগ লগাই আছে, তো আমি তেখেতসকলক একচুৱেলি ধন্যবাদ দিব লাগে. কাৰণ আজি তেখেতসকলৰ কাৰণেই কিজানি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে ইয়াতে কি হৈ আছে এইটো গম পালে, আৰু আমাৰ জুবিন দাৰ কথা গম পালে. আমি যদি তাহাঁতে যদি হেছটেগ নলগালেহেঁতেন, চ' এই বস্তুটো মেবি নেশ্যনেল মিডিয়াৰ তাতেও নগ'লহেঁতেন. এই যোনটো ইনচিডেণ্টটো হৈছে সেইটো চাগে নেশ্যনেল মিডিয়ালৈকেও নগ'লেহেঁতেন. দিজ social media facades that has been going on, you know, in the first week itself, some things about Garima, Zubeen Garg's wife, you know, talking about her character. All these things shows one thing, and also including that incident that happened, that tragic incident that happened in Singapore. All this proves one thing, is that we are kind of losing it, you know. We are kind of losing everything. We are now converting into machines. Okay, shows their upbringing, shows their moral compass, and shows their ethics and their integrity, how they want to live life. I'm also seeing a lot of people, you know, trying to bring the Assamese community down. क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम लोग को हजम नहीं हो रहा है? Are you not being able to digest that someone this big, you know, can be from Assam? Someone this big can be an Assamese, you know, someone this big who you were not aware of is actually God in the form of human. You must have known that his funeral had the second largest gathering in the world. Now we need justice for Zubeen Garg. We need justice because he did a lot for the humanity, for the people, for the culture, and now it is time for us to give him back. Amak niyai lage, we want justice for Zubeen Garg. We want the guilty to be behind the bars. And as per IPC section 304A, it is a punishable act, offense. Thank you so much.
জয় জুবিন দা, জয় আই অসম। নমস্কাৰ।